Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Wednesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. I am Anubha Rohatgi, and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Shukla. नमस्कार। मार्केट मंत्र के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम लेकर आए आपके लिए आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के समाचार, साथ ही हम उन पर चर्चा भी करेंगे। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम हेडलाइंस के साथ। अनुभा। Thank you, Nikhil. Domestic stocks declined more than 1% after rating agency Fitch downgrades U.S. credit rating. Sensex ends below 65,800 level. Nifty settles near the 19,500 mark. Parliament passes Minerals and Mines Amendment Bill, encourages private sector for exploration of critical and deep-seated minerals. And Brent crude hovers around $85.50 per barrel. रेटिंग एजेंसी फिच द्वारा अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को नीचे किए जाने के बाद घरेलू शेयर बाजार में 1% से अधिक की गिरावट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 65,800 अंक के स्तर से नीचे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 19,500 अंक के आसपास जाकर बंद हुआ। संसद ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक पारित किया। इससे महत्वपूर्ण और गहराई में पाए जाने वाले खनिजों के अन्वेषण में निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $85.50 प्रति बैरल के आसपास। और हमारे साथ तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं वरिष्ठ बाजार विशेषज्ञ अविनाश गोरक्षकर जी। अविनाश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। गुड इवनिंग। और शुरुआत करते हैं हम शेयर बाजार की खबर के साथ में। घरेलू शेयर बाजार में आज 1% से अधिक की गिरावट आई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 65,800 अंक के स्तर से नीचे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 19,500 अंक के आसपास जाकर बंद हुआ। दोनों ही शेयर बाजारों में वैश्विक रूप से मिले नकारात्मक संकेतों के बीच गिरावट आई। दुनिया भर के शेयर बाजारों में रेटिंग एजेंसी फिच के द्वारा अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को एक पायदान नीचे लाकर AA+ रखने के कारण गिरावट का रुख देखा गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 677 अंक लुढ़ककर 65,783 के स्तर पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 207 अंक नीचे आकर 19,527 पर आ गया। विस्तृत बाजार पर नजर डालें तो बिकवाली के दबाव में बीएसई मिड कैप इंडेक्स आज 1.39% घाटे में रहा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.18% की सुस्ती दर्ज की गई। Key domestic share indices today logged losses of more than 1%. The BSE Sensex declined below the 65,800 level, while the NSE Nifty ended near the 19,500 mark. Both indices fell amid negative cues from global stocks. Share markets around the globe witnessed losses after rating agency Fitch downgraded the U.S. credit rating by one notch to AA+. The BSE Sensex plunged 677 points to close at 65,783. The NSE Nifty declined 207 points to settle at 19,527. In the broader market at the BSE, the mid-cap index fell 1.39% and the small-cap index slipped 1.18%. In the Sensex index, out of 30 companies, shares of 5 companies appreciated and 25 declined. Nestle India surged 1.2%, Hindustan Unilever gained 0.8% and Asian Paint rose 0.6%. On the other hand, Tata Steel declined 3.5%, Tata Motors fell 3.2% and Bajaj Finserv slipped 0.6%. In sectoral indices at the BSE, all 20 sectors logged losses. The metal sector lost the most as it declined 2.5%. Utilities and power both fell 2.3% and the telecom sector slipped 2%. The overall market breadth was negative as shares of 1,250 companies appreciated and 2,353 companies declined. A total of 139 shares remained unchanged. Avinash, of course, we are seeing the repercussions of the step taken by the Fitch today against the, so far as U.S. credit rating is concerned. But the fact is that Fitch had indicated way back in May that it is going to take this step. So why then were the markets spooked? I think, frankly, as you rightly mentioned, that Fitch had already given a warning
But I think the actual decision, created a little panic in the market, especially the US markets yesterday. And in fact, today, when the news came, when the markets opened in India, we saw a kind of a chain reaction looking at the Sensex and the Nifty. The Nifty, went below 19,550 levels. The Sensex also dropped significantly by almost 678 to almost 700 odd points. And I think the fall was, led by basically the PSU banks, the metals, the auto stocks, which are all index heavy kind of sectors. Most importantly, I think this is a sentimental kind of, negative surprise. I don't think it's going to impact the broad sentiment in the Indian markets for a longer term period. And maybe in the next 1 or 2 days, some sort of value buying and some sort of, stability in the market would continue. But yes, this was a knee-jerk kind of reaction to the markets. And I think from today, it would be back to business as normal. I don't think it's going to create a panic in the Indian markets, considering the fact that, today sellers, that is FIs, were sellers to the extent of almost 1,800 crores. There was hardly any domestic buying. So that also compounded the effect of the fall in the equity market today. But net, I think, most of the negatives are there in the price. I don't think one should look at it from a longer term perspective. And I think from tomorrow, maybe you could see a little bit of stability coming back, because the markets have a habit of looking forward on the earnings, on the data points, and that's how the markets would be. So do you think that, because we've been seeing a healthy rally in the equity market for the last few months, so do you think this downgrade is actually acted as an excuse for some profit booking and a much needed correction in valuations? Yeah, exactly. I think the market required some excuse, because markets were trading in a kind of a bubble zone. And I think in my earlier interactions with you, with all of you, I have already mentioned that, the markets were getting a little bit exhausted. And despite the fact that, all market people were saying that the index could touch, 20,000 for the Nifty, I think incremental gains had got limited because have been on a runaway, in a tearing kind of, hurry. Obviously, liquidity has come in, but I think markets had gone, quite fast compared to the earnings growth which have been reported by many companies in the market based on the Q1 numbers which have been reported till now. So I think, yes, it was an excuse, but I think a healthy correction is always good for the market. I think whenever the market corrects, I think that gives an opportunity to get into good quality businesses at good valuations. And I think today the markets have corrected. Maybe we might see a little bit of sell-off even tomorrow, but that does not change the broad sentiment, which is a buy on decline kind of market, especially for the Indian equity market. अविनाश, अगर एक पर्सपेक्टिव में हम देखें तो मार्च लगातार बढ़त का रुख देखा जा रहा था और आज सुबह तक ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जो ये रेटिंग एजेंसी ने अपनी रेटिंग जारी की है उससे बहुत ज्यादा इंडियन मार्केट को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक अच्छा खासा असर भी देखने को मिला है. तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग का क्या रोल रहा है? नहीं, देखिए, मुझे लग रहा है कि पहली बात तो जो FIs है उनका काफी बड़ा रोल है इस तेजी में. और जैसे सभी को पता है कि आज के बाजार में जो सेलिंग का मोमेंटम जो ज्यादा देखने को मिला, वो इसका एक कारण ये भी था कि FIs ने आज भारी मात्रा में इंडियन इक्विटी मार्केट्स में बिकवाली की है जी. कितना दिन चलेगा वो पता नहीं है, बट एक बात तो क्लियर है कि मार्केट के करेक्शन के लिए वेट ही कर रहा था. बहुत जल्दी मार्केट तेजी से भागा था मार्च अप्रैल के बाद, और उसके बाद एक थोड़ा करेक्शन और थोड़ा सा कंसोलिडेशन की जरूरत थी. तो मुझे लग रहा है कि देखिए, बाजार में 1-2 दिन के लिए हो सकता है कि मार्केट एक थोड़े छोटे दायरे में घूमे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम अप्रोच ले ले और हम लोग ने अगर स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट देखे तो मुझे लग रहा है कि काफी ऐसे स्टॉक्स और सेक्टर्स हैं जहां पे नतीजे अच्छे हैं, कमेंट्री अच्छी है, आप वैल्यू बाइंग जरूर देखने को मिलेगी. तो वहां पे मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी दिक्कत ब्रॉडली इंडियन इक्विटी मार्केट्स को आएगी. हाँ, थोड़ा समय मार्केट थोड़ा सा एक छोटे रेंज में घूमेगा, लेकिन डेफिनेटली आगे चल के इसमें बढ़त आ सकती है. होपफुली अगर क्वार्टरली प्रॉफिट या मैक्रो डेटा पॉइंट्स और इंप्रूव होते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है जो आज जो इवेंट हो गया है फ्लिच का, वो मेरे ख्याल से अभी प्राइसेस में ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है. देखिए, मार्केट वही रीजन के लिए कल करेक्ट नहीं होगी. मार्केट को नया इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है. तो आज का जो हो गया वो हो गया, बट कल के लिए आगे का रास्ता देखेगी कि कंपनी की अर्निंग्स कैसे आ रही है और दूसरे मैक्रो फैक्टर्स कैसे प्ले आउट हो रहे हैं. तो डेफिनेटली कल इतनी भारी गिरावट आएगी ऐसा मुझे नहीं लगता है. Avinash, other than the reaction to the Fitch rating, which you've explained in detail, what are the other factors that may have added to the market bulls? Do you think that the weak factory activity data that has come out from the Eurozone and China could have also contributed to this a little bit of the fall in the market?
No, I think, see, China market, if you ask me what has happened is the Chinese market is going through a significant challenge. On one side, commodity prices have come down. Secondly, the Chinese economy is in serious trouble. Most of the core industries are not doing well. And in fact, there are strong reports that China would obviously announce some stimulus to, ensure that its economy comes back on track. So I think the Chinese factor will definitely be important once the stimulus is announced, because some sort funds or some emerging, markets which were getting more funds rather than China was getting may happen that, in the near term, China may get a little more share of the FI money. But net, I think, Indian economy is in a very strong wicket. I don't think there is anything fundamentally wrong with the economy. Inflation is also well under control, and hopefully, post September, October, we could see, interest rates softening, because a good monsoon has already given indication that the RBI may obviously not look at a very aggressive interest rate hike now. So all things considered, I think it was basically the market was overbought. The stock prices were, had moved up significantly in a very short period of time. So I think the markets were looking for some excuse and some reason for a healthy correction, and that is exactly what has happened today. But what does this downgrade mean for the U.S. economy, if anything at all? Because the U.S. Treasury Secretary Janet Yellen has responded to this downgrade, and she has called this completely arbitrary and outdated. No, I think, basically, earlier also the U.S. economy has been downgraded, and this time also it has happened. So I don't think life is going to change. What is important is that, this downgrade, if it is compounded and if some other credit rating agency also downgrades the U.S. economy, then I think there could be a problem. But my sense is that, this is not going to impact the U.S. economy that badly, because clearly from a corporate performance point of view, we have been seeing that in this quarterly season, most of the large corporates like Google, Amazon, Netflix, some of such larger names in the US American economy have done pretty well. And I think the job market has also recovered. So I think the major challenge for the US economy is the inflation data point, which still remains quite elevated. And I think recently the Governor Jeff Powell clearly hinted that, the US economy is not going to go into a recession. Obviously, inflation is going to be a challenge, and which may take a couple of quarters to cool. अविनाश, अगर बाजार की हम चाल देखें तो आईटी सेक्टर में कल खासी गिरावट हमें देखने को मिली, लेकिन इसके पहले मजबूती भी दर्शा रहा था। तो आने वाले इस टाइम में आईटी सेक्टर से क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? और इस बीच में मिड कैप इंडेक्स के बारे में आपका क्या विचार रहेगा? देखिए, आईटी सेक्टर में अभी भी मुझे लग रहा है कि काफी चैलेंजेस रहेंगे। जब बड़ी कंपनी इन्फोसिस जो बड़े बेस पे काम करती है, इन्होंने अपना गाइडेंस बहुत ही बड़ी मात्रा में काटा है, तो उसका मतलब क्लियर है कि हम आने वाले 2 क्वार्टर या 3 क्वार्टर के लिए, 6 से 9 महीने के लिए, जो सामने वाला जो बिजनेस आउटलुक है वो अभी भी काफी क्लाउडी लग रहा है। देखिए, सबसे बड़ा बिजनेस इंडियन आईटी कंपनीज को यूएस और यूरोप से मिलता है, और वो इकोनॉमीज अभी तकलीफ में। तो मिड कैप इंडेक्स भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुकावट के साथ काम करेगा। हालांकि देखिए, पिक एंड चूज अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक कंपनीज की बात करें तो कई कंपनीज है जिन्होंने अच्छे नतीजे दिखाए, लेकिन ब्रॉडली जो बड़ी तेजी आईटी कंपनीज में आएगी वो मेरे ख्याल से आपको सेकंड हाफ ऑफ FY24 में देखने को मिलेगी, यानी कि सितंबर के बाद। अभी फिलहाल आप ये समझ के ले लीजिए कि ये सेक्टर ज्यादातर अंडर परफॉर्मर ही रहेगा। अविनाश, एक प्रश्न आपसे और पूछना चाहूंगा। आईटी सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, ताइवान ने एक बड़ा डिसीजन लिया है इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। जो कंपनी है फॉक्सकॉन, उन्होंने बोला है कि अब हम एक अपना खुद का प्रोजेक्ट लगाएंगे, अपनी भागीदारी वापस ले रहे हैं। इस फैसले को आप किस रूप में देखते हैं? इससे आईटी सेक्टर को क्या बूम मिलेगा, और खासतौर पर हमारे मार्केट के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो कितना फायदेमंद हो सकता है ये? देखिए, फॉक्सकॉन जो कंपनी है, उन्होंने कहा था वो पहले तो वेदांता के साथ एक सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाने वाले थे। अभी उन्होंने कहा है कि वो खुद ये प्लांट लगाएंगे। वेदांता ने भी ये कहा है कि वो कोई दूसरे कोलैबोरेटर को ढूंढेंगे। मेरे ख्याल से देखिए, सेमीकंडक्टर का जो यूसेज है वो ज्यादातर टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल, उसके बाद कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इन सेक्टर्स में ज्यादा यूज होता है। आईटी सेक्टर के लिए मुझे नहीं लगता है कोई बड़ा इम्पैक्ट इससे आएगा। बट हाँ, इससे निवेश अगर फॉक्सकॉन इंडिया में करता है तो बड़ी मात्रा में इंडिया को FDI मिलेगा, और ये काफी बड़ी पॉजिटिव चीज है, क्योंकि देखिए सेमीकंडक्टर ज्यादातर ताइवान से ही बनाए आते थे। अगर वो इंडिया में बनाएंगे तो ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया अभी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट भी गवर्नमेंट ने अच्छा किया है, तो वो नेट लॉन्गर टर्म के लिए इंडिया के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। आईटी सेक्टर के लिए डायरेक्टली इसका कोई ज्यादा लाभ या नेगेटिव सरप्राइज आएगा ऐसा लगता है।
Avinash, as Nikhil asked you about the Foxconn investment, their announcement, you're saying that it will not impact the IT sector too much. But what about the mobile phone manufacturing, which is happening in India? Right now, we are basically assembling. India, what we see here is the assembling of mobile phones, and we're getting the components from outside. But Foxconn has now said that it will make mobile phone components for iPhone and chip making equipment. So, given the fact that then the components are going to be manufactured here, how much of a value addition will it give to the Indian mobile manufacturing sector? No, I think for the domestic mobile sector, it is a very big boost because, most of the components, including the semiconductor chips, are imported. And I think once Foxconn puts a facility in India, you're going to see, obviously, prices coming down. Players in India would also benefit because they would be sourcing the semiconductor chips, from the local player here. And I think to that extent, the industry will definitely be very competitively priced, not only in the domestic market, but even in the export market. Export of electronic items is a growing kind of subject, from India. And I think if we are cost competitive, hopefully with major semiconductor, that would obviously benefit the mobile industry over the next, say, 2 to 3 years. अविनाश, एक चीज आपसे और पूछना चाहूंगा मैं। अभी सेक्टोरल की अगर हम बात करते हैं खासतौर पे, तो उसमें देखा गया कि सारे ही लाल निशान में ही बंद हुए थे। लेकिन बैंकिंग की अगर हम बात करें तो बैंकिंग सेक्टर अभी तक बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ है तमाम चीजों से। एक अच्छा माहौल हमें देखने को मिल रहा है। तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगे इससे? देखिए, मुझे लग रहा है कि ये जो पूरा अर्निंग सीजन अभी तक आया है, इसमें बैंकिंग, उसके बाद जो एनबीएफसी कंपनियां है, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज है, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इन्होंने बहुत ही बेहतरीन नंबर दिखाए। इनफैक्ट सरकारी बैंक की बात करें तो कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, मुझे लग रहा है कि काफी हद तक इन बैंक्स ने अपना पूरा जो पुराना लीगेसी एसेट्स था, जैसे कि बैड एसेट्स थे, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे, उसको कम किया है। प्लस बिजनेस ग्रोथ काफी अच्छी तरह से बढ़े। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, नंबर बहुत तगड़े आ गए। प्लस अगर हम माइक्रो फाइनेंस की कंपनी की बात करें, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की बात करें, तो लग तो रहा है कि अगले 6-8 महीने की क्रेडिट ग्रोथ अगर 10-12% रहता है तो इन सारे प्लेयर्स को अपनी बैलेंस शीट बढ़ाने में डेफिनेटली मदद मिलेगी। और ये जो मोमेंटम पॉजिटिव ट्रेंड आप देख रहे हो प्रॉफिटेबिलिटी का, वो आगे भी चलता रहेगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि बैंकिंग अभी भी इस समय काफी अट्रैक्टिव लग रहा है अगर किसी को लंबा निवेश करना है। जी, चलिए अब रुपए पर हम नजर डाल लेते हैं। तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 82 रुपए 59 पैसे पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 102.23 पर चल रहा था। Moving on, the Parliament has passed the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill, with the Rajya Sabha approving it today. The Lok Sabha has already passed the bill. The bill will encourage the private sector in the exploration of critical and deep-seated minerals. The bill amends the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957, which regulates the mining sector. One of the major reforms proposed in the bill is to introduce exploration license for deep-seated and critical minerals. Deep-seated minerals such as gold, silver, copper, zinc, lead, nickel, cobalt and platinum group of minerals, diamonds are difficult and expensive to explore. The proposed exploration license would facilitate, encourage and incentivize private sector participation in all spheres of mineral exploration for critical and deep-seated minerals. The bill also has provisions to remove 6 minerals from the list of 12 atomic mineral list. These minerals have various applications in the space industry, electronics, communications, energy sector and electric batteries, and are critical in the net zero emission commitment of India. Due to their inclusion in the list of atomic minerals, their mining and exploration are reserved for government entities. Upon removal of these minerals from the list, exploration and mining of these minerals will be opened up for the private sector as well. The bill also empowers the central government to exclusively auction mining leases and composite licenses for certain critical minerals. Avinash, what is the significance of this bill which has been passed, the amendment bill which has been passed by the Parliament today, especially to, when we talk about the fact that it has removed 6 minerals from the list of 12 atomic mineral list, and it has, allowed private companies now to apply for mining? No, I think it's a very landmark judgment, and I think it's going to encourage a lot of private investment in this place. My sense is that, over the next, say, 2 years, you will be seeing a lot of private investment coming in. And obviously, with the kind of growth opportunity present,
For a long time, this was an opportunity which was only given to government companies, but now the government having opened this opportunity for private companies, you will see a lot of FDI investment coming in, not only from Indian companies, but even joint venture companies where some foreign strategic partners could also be entering the market. So I think net it's a very good positive development. It will enable the sector to grow because a lot of capital investment will be made. And I think the benefit of all this will definitely be realized over the medium to long term. इस बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि साल 2022-23 में 3,86,000 से अधिक छात्रों ने माध्यमिक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का विकल्प चुना है। आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका और उनके महत्व को मान्यता दी है। उन्होंने कहा कि साल 2022-23 में वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के लगभग 12,000 विद्यार्थियों ने एआई को चुना। उन्होंने उल्लेख किया कि एआई को 8वीं कक्षा में 12 घंटे के मॉड्यूल के रूप में और 9वीं से 12वीं कक्षा में एक कौशल विषय के रूप में पेश किया गया। And before Nikhil shares the details of the Asian and European markets, Avinash, I would like to get back to this, bill that has been passed by the Parliament today. Now, how important? What do you think that how this step will affect the markets? I mean, it's so big. So far as this sector in the stock markets is concerned, the mines and minerals sector, how will it affect the sector in the long run? The bill. I think in the longer term, definitely, I think large companies like Tata Steel or for that reason Hindalco, Vedanta, these are all companies which are now going to take the benefit of this announcement by the government. Clearly, investment in new minerals, and that too after the government has given them access to develop them, is a very big opportunity. In fact, despite the fact that the metal sector is a cyclical sector, the opportunity given is very large, and obviously Indian companies have been globally cost competitive. So once investments do come in, you'll see a lot of news flows coming in for export of such minerals to countries abroad. Plus domestically also we are seeing a lot of corporate capex happening. So clearly I think even the domestic market is very large. So in the very near term you could possibly also see maybe tomorrow's trading session some sort of bounce in some of the large metal companies, because the markets would be looking forward for some Indian companies to actually make some big announcements on this area. और अब हम चलते हैं वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां पर आज गिरावट का रुख रहा। हांगकांग का हैंगसेंग 2.5% लुढ़क गया। जापान का निक्केई 225 2.4% नीचे आ गया। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम इंडेक्स 1.5% की सुस्ती के साथ बंद हुआ। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.9% घाटे में रहा। उधर बिकवाली के दबाव में चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.9% गिरकर बंद हुआ। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चले तो समाचार लिखे जाने तक गिरावट का रुख था। अंतर्देशीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.9% घाटे में चल रहा था। फ्रांस का कैक 0.7% नीचे आकर और जर्मनी का डेक्स 0.4% लुढ़क कर कारोबार कर रहे थे। अविनाश, एशियाई और यूरोपीय बाजारों में जो गिरावट देखी गई, कोई इसमें डाउट नहीं कि अमेरिका का बहुत बड़ा इसमें असर पड़ा। इसके अलावा भी कुछ और कारण रहे हैं क्या? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए कारण तो ज्यादातर मुझे लग रहा है कि मार्केट में थोड़ा सा रनअप कंपनीज के वैल्यूएशंस में बहुत छोटे समय में ज्यादा हो गया था, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत तेजी से बढ़ी थी और हमने देखा कि अप्रैल टू ऑलमोस्ट जुलाई तक मार्केट एक वन साइडेड चला था। तो कभी ना कभी तो एक हेल्दी करेक्शन चाहिए था। ऐसा कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज मैक्रो पे या कंपनी के नतीजों पे कोई आया नहीं है। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो जो आईटी सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है, एग्रोकेमिकल सेक्टर है, वहां पे ऑलरेडी सेक्टर की हालत खराब है, तो हमने ऑलरेडी इसमें थोड़ी पिटाई देखी है। बट मोटा मोटी मुझे लग रहा है कि और कोई ऐसा बड़ा कारण नहीं है जिससे आज बाजार गिरा है। ज्यादातर यूएस का ये जो डिफॉल्ट का जो समाचार है वही मार्केट्स को आज सेंटिमेंटली नीचे उतारा है, और ये मुझे लग रहा है ज्यादा दिन चलेगा नहीं, क्योंकि सेंटिमेंट आज के लिए खराब था, लेकिन कल वापस मार्केट कोई नई खबर के लिए तैयार रहेगी। Moving on to the US market, the S&P 500 and the Nasdaq closed weaker yesterday. The three major US indices traded in a narrow range on the first day of the seasonally slow August, ahead of US jobs data and major companies' earnings reports later this week. The Dow Jones Industrial Average rose 0.2%, while the S&P 500 declined 0.3%, and the Nasdaq Composite Index fell 0.4%. Avinash, talking about the US markets in the last meeting of the US Fed in, just a couple of weeks ago, Jerome Powell raised the interest rate by 25 basis points, and he said that if needed we will do it again, but he's also said that if not, we may also consider a pause. What is your expectation from the next meeting, which is going to happen in September? Or is it too early to really even speculate about it?
No, I think one observation which Mr. Jeff Powell made very clearly and which actually made the markets quite positive was that he clearly mentioned that the US economy will not go into a recession. I think this point was very clear from his side. As far as the interest rates are concerned, I think we could see maybe another 1 or 2 interest rates hikes coming in because, the data point on inflation still remains elevated. And I think the Fed is very clear that they want to bring the inflation number down to 2%. So this may not happen immediately. Maybe for a couple of quarters, we could see interest rates, going up. But I think that is already partly, in the market, but as data changes dramatically and positively on the inflation side, then I think you could definitely expect a pause. I think the governor has clearly said that they will be looking at data points and then only taking a conscious call as to how they move ahead with the interest rate scenario. अविनाश, एक बात आपसे मैं पूछना चाहूंगा इसी सिलसिले में, जैसे कि बहुत से भारतीय ऐसे निवेशक हैं जो अमेरिका में भी निवेश करते हैं या फिर भारत के बाजारों में निवेश करते हैं और छोटे निवेशक भी हमारे यहाँ बहुत सारे हैं। क्या उनको किसी तरह की मतलब ऐसी कुछ सोच रखने की जरूरत है कि नुकसान हो सकता है या कम समय के लिए पैसा लगाना चाहिए या फिर पैसे को भी रोकना चाहिए, ऐसा कुछ? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से इंडिया में ही ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है कि मैं समझता हूं कि अगले 6 से 12 महीने के लिए इंडियन मार्केट्स एक बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देंगे। हालांकि देखिए, मार्केट्स वोलेटाइल जरूर रहेंगे। हमारे मार्केट्स में इलेक्शन का भी फैक्टर इन हमको करना पड़ेगा। नवंबर दिसंबर में स्टेट इलेक्शंस है जी। मुझे लग रहा है कि ग्लोबल मार्केट्स में जो वोलेटिलिटी चल रही है, स्पेशली यूएस और यूरोप में, तो वहां पे मुझे नहीं लगता है कोई शॉर्ट टर्म में कोई निवेश करता है तो कोई बड़ा पैसा बनेगा। मेरे ख्याल से इंडियन मार्केट्स विल कंटिन्यू टू रिमेन attractive relative to both US and Europe. And Avinash, just recently, Finance Minister announced that Indian companies can now directly list their shares on foreign exchanges. What is the implication of this for the companies as well as for the investors? No, I think, my sense is that, typically we have seen companies raising money through ADRs and GDRs, and I think direct listing is definitely something which, possibly some of the Indian companies were looking forward to. The government needs to relax some concessions here, and I think over the period of time, as Indian companies become bigger and the global appetite for Indian companies becomes big, I think this will be a reality. But in the very near term, I don't think it is going to create a kind of a negative surprise for the Indian markets here. I think there's a huge amount of appetite by the FIs, from the Indian markets, and as long as that continues, and with the kind of growth possibility and the growth numbers which are expected over the next 1 or 2 years, I think, markets should definitely not look at this factor very closely and may not give it that kind of weight. So I think nothing. Right. Maybe at a later stage, this may happen, but markets will wait for that. Moving on to commodities, oil prices today surged, trading near their highest levels since April, buoyed by crude and fuel product inventory data, showing robust U.S. demand. In intraday trade, Brent crude was trading at $85.40 per barrel. West Texas Intermediate crude price was at $81.95 per barrel when reports last came in. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त की आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य अंतर्दिवसीय कारोबार में 395 रुपए बढ़कर 59,330 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं दूसरी ओर सितंबर अनुबंध वाली चांदी 680 रुपए की वृद्धि के साथ 74,620 रुपए प्रति किलो के स्तर पर चल रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में देखें तो न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान सोना तेजी के साथ $1,987.80 प्रति ऑन्स पर और चांदी $24.50 प्रति ऑन्स पर कारोबार कर रही थी। अविनाश जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. And before we close, a reminder of the headlines. Domestic stocks declined more than 1% after rating agency Fitch downgrades U.S. credit rating. Sensex ends below 65,800 level. Nifty settles near the 19,500 mark. Parliament passes Mines and Minerals Amendment Bill, encourages private sector for exploration of critical and deep-seated minerals. And Brent crude hovers around $85.50 per barrel. और अंत में मुख्य समाचार। रेटिंग एजेंसी फिच द्वारा अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग को नीचे किए जाने के बाद घरेलू शेयर बाजार में 1% से अधिक की गिरावट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 65,800 अंक के स्तर से नीचे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 19,500 अंक के आसपास जाकर बंद हुआ और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य $85.50 प्रति बैरल के आसपास। And that's it in this edition of Market Mantra. From all of us, Namaskar. नमस्कार। Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. डैडी डैडी, गाड़ी रुक गई, चलाओ ना। बेटा चाबी भर दूंगा फिर चलने लगेगी। ये देखो। डैडी देखो फिर रुक गई। क्या हर बार चाबी भरनी होगी? हाँ बेटा, हर बार। इसलिए LIC लाया है जीवन लाभ।
एक ऐसी एंडाउमेंट पॉलिसी जिसमें एक निश्चित अवधि के बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना होगा, फिर भी फायदों का सिलसिला चलता रहेगा। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।